स्थापित करने पर काम किया जाएगा। सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट को गति दी जाएगी। साथ ही श्रीलंका के पावर प्लांट्स के लिए एलएनजी सप्लाई की जाएगी। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्ष एकता को जल्द संपन्न करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, भारत ने अब तक श्रीलंका को $5 बिलियन की लाइन्स ऑफ क्रेडिट और ग्रांट सहायता प्रदान की है। श्रीलंका के सभी 25 जिलों में हमारा सहयोग है और हमारे प्रोजेक्ट्स का चयन सदैव पार्टनर देशों की विकास प्राथमिकताओं पर आधारित होता है। अपने विकास सहयोग को आगे बढ़ाते हुए हमने निर्णय लिया है कि माहो अनुराधापुरम रेलवे सेक्शन के सिग्नलिंग सिस्टम और कांके संथुराई पोर्ट के पुनरुद्धार के लिए ग्रांट सहायता दी जाएगी। शिक्षा सहयोग के तहत अगले वर्ष से जाफना और पूर्वी प्रांत के विश्वविद्यालयों में 200 छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में श्रीलंका को 1500 सिविल सर्वेंट्स को भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ श्रीलंका में कृषि, डेयरी और फिशरीज के विकास के लिए भी भारत सहयोग देगा। श्रीलंका में यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी इस प्रोजेक्ट के लिए भी भारत भागीदारी करेगा। फ्रेंड्स, हम दोनों इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि हमारे सुरक्षा हित एक दूसरे से जुड़े हैं। हमने रक्षा सहयोग समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है। हाइड्रोग्राफी पर भी सहयोग की सहमति बनी है। हम मानते हैं कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और विकास के लिए अहम प्लेटफॉर्म है। इसके अंतर्गत मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, तस्करी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ लड़ाई, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ जैसे विषयों पर सहयोग बढ़ाया जाएगा। फ्रेंड, भारत और श्रीलंका के पीपल टू पीपल संबंध हमारी सभ्यताओं से जुड़े हैं। जब भारत में पाली भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया तो श्रीलंका में भी उसकी खुशी मनाई गई। फेरी सर्विस और चेन्नई जाफना फ्लाइट कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिला है और साथ ही हमारे सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूती मिली है। हमने निर्णय लिया है कि नागपतिनाम और कंके संथुराई फेरी सर्विस की सफल शुरुआत के बाद अब रामेश्वरम और तलाइमनार के बीच फेरी सर्विस शुरू की जाएगी। बौद्ध सर्किट और श्रीलंका के रामायण ट्रेल के माध्यम से पर्यटन की अपार संभावनाओं को साकार करने पर भी काम किया जाएगा। फ्रेंड्स, हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में एक मानवीय अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने श्रीलंका में रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसिलिएशन पर भी बात की। राष्ट्रपति दिशा नायक ने अपने समावेशी दृष्टिकोण के बारे में
मुझे बताया। हम आशा करते हैं कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और श्रीलंका के संविधान के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन और प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। फ्रेंड्स, मैंने राष्ट्रपति दिशानायक को आश्वासन दिया है कि श्रीलंका के विकास के लिए उनके प्रयासों में भारत एक भरोसेमंद और विश्वसनीय पार्टनर बना रहेगा। एक बार फिर मैं राष्ट्रपति दिशानायक और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत करता हूं। मैं उनकी बोध गया यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रेरणा से भरपूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request His Excellency Mr. Anurag Kumara Dissanayake, President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, to give his remarks to the media. Honorable Prime Minister Narendra Modi, Honorable Ministers, ladies and gentlemen, journalists. After becoming the President of Sri Lanka, this is my first foreign visit. And I'm so happy that I was able to come to Delhi on my first state visit. I want to thank India for the invitation extended to me, and also for the warm hospitality that was extended to the whole delegation, including myself. I want to thank Honorable Prime Minister Modi and President Murmu for that support and hospitality. This visit paved the way for the cooperation between the two countries to be developed further. Social protection and durable development are the cornerstones on which the people of our countries have elected both of us to power. This is the parliament which has the most number of members of parliament from one single party. Never in the history have we had a composition like this. The National People's Power achieved a historic electoral victory at the recently concluded presidential election and the general election. The message expressed by the people of Sri Lanka paved the way for a new culture to emerge in Sri Lanka. The people in the north, the south, the west and the east, they have all placed their faith in us. The people in all parts of the country, who belong to all communities and all creeds, religions, have voted for us. Diversity is a cornerstone of democracy. I know that I have understood that. From caring and sharing, we have to be a member of development. The development that is taking place in the country should be an inclusive development for which we get the participation of people of all communities. Honorable Prime Minister Narendra Modi and myself had bilateral talks a few minutes ago. We
undertook a comprehensive review of our aspects on both the countries, and we shared our experiences and also the avenues that we can look at for further advancement. We faced an unprecedented economic crisis a few months ago, rather some 2 years ago, and India supported it immensely to come out of that quagmire. And it has also helped us immensely after that, especially in the debt restructuring process. Sri Lanka secures a very significant place in the foreign policy of India, I know. And in Honorable Narendra Modi, the Prime Minister of India, assured us full support, and also he assured us that he will always protect the territorial integrity and sovereignty of Sri Lanka. We also discussed about the trade ties between the two countries and the energy aspect, capacity building, education, agriculture and social protection. The cooperation in these sectors were discussed by both of us. India has achieved tremendous success in digitizing the public services. So likewise, Sri Lanka is also taking the same path, and Honorable Prime Minister Modi assured me of support in that endeavor. We have strong person-to-person relationships, and I think these the paths that we have chosen for bilateral development will certainly pave the way for more avenues to come up and for more advantages to be accrued to both countries. Sri Lanka, I asked for support from the Prime Minister of India, and he assured me of continued support. The bilateral technical support that is required for the offshore activities is also sought from you, Honorable Prime Minister. We also want to find a durable and sustainable solution to the fishermen's issue that has become a plague for both countries. And there are bottom trawling systems being adopted by the fishermen in that area, and that needs to be put an end to, because that will spell doom to this industry. And we requested the Honorable Prime Minister to take steps to put an end to practices which are detrimental to the industry and the people. And there are some bilateral agreements were exchanged today. And I invited the Honorable Prime Minister to visit Sri Lanka. And I have also given an assurance to the Prime Minister of India that we will not allow our land to be used in any way in a manner that is detrimental to the interest of India. The cooperation of India will certainly flourish, and I want to reassure our continued support for India. Thank you. Thank you. That concludes the press statements. Thank you for your presence, ladies and gentlemen.